1. Predictable. قابل پیشگوئی. Meaning, able to be predicted, anticipated or expected. 2. Opt. منتخب کرنا انتخاب کرنا. چننا اپنی پسند سے اختیار کرنا. موضوع ہونا چننا. Meaning, to choose or prefer one option over others. 3. Baccalaureate. فرانس اور کچھ دوسرے ممالک میں اور کچھ بین الاقوامی اسکولوں میں آخری ثانوی اسکول کا امتحان. امریکہ میں ہائی اسکول اور کالج کی تعلیم مکمل کرنے والے طالب علموں کے لیے ایک مذہبی خدمت بات چیت. جلسہ تقسیم اسناد کا حصہ. Meaning, baccalaureate refers to an academic degree conferred on someone who has successfully completed an undergraduate course of study. It can also refer to a farewell address given to a graduating class. 4. Monopoly. اجارہ داری. حق تجارت بلا شرکت غیر مطلق اجارہ. کسی چیز پر کامل اختیار قبضہ ٹھیکہ. اجارہ مخصوص اجازت خاص سامان کسی خاص خدمت کی فراہمی میں تجارت کا مکمل کنٹرول. سامان سروس کی ایک قسم جو اس طرح سے کنٹرول کی جاتی ہے. Meaning, the exclusive possession or control of the supply of or trade in a commodity or service. 5. Reform. اصلاح کرنا. سدھارنا اثر نو بنانا. درست کرنا. سیاسی اصلاح. سماجی اصلاح. درستی. بہتری. Meaning, to make changes in something to improve it or bring it closer to a particular standard. It can also refer to a movement for change, especially in social or political contexts. 6. Psychometrician. ماہر نفسیات. Meaning, a person who is an expert in the design, administration, and interpretation of quantitative tests and assessments of psychological characteristics such as intelligence. 7. Luster. چمک. دمک. تابانی. آب. رونق. روشنی نور تجلی تابانی شان و شوکت. Meaning, a gentle sheen or soft glow, especially from a surface, fame, success, or distinction. 8. Perception. ادراک احساس شعور سمجھ تصور گمان. Meaning, the ability to see, hear, or become aware of something through the senses, or the way in which something is interpreted or understood. 9. Incentivize. کسی کو انعام دے کر کسی خاص طریقے سے برتاؤ کرنے کی ترغیب دینا. کسی کو کچھ کرنے کی ترغیب حوصلہ افزائی کرنا. Meaning, to provide someone with a motivation or incentive to do something. 10. Vigor. مضبوط. توانائی. ہمت. جوان مردی. طاقت زور تاب و تواہ. دم خم. کسبل. جسمانی طاقت اپنے عروج پر. Meaning, physical or mental strength and energy, vitality, enthusiasm, or intensity. 11. Subsidy. امداد. وہ رقم جو پارلیمنٹ بادشاہ کو ریاست کے مخصوص کام کے لیے دیتی تھی. Meaning, a sum of money granted by the government or a public body to assist an industry or business so that the price of a commodity or service may remain low or competitive. 12. Sluggish. کاہل. سست. محنت سے جی چرانے والا. عادی سہل اندار. Meaning, lacking energy or alertness, slow-moving or inactive. 13. Extinction. ایک ایسی صورتحال جس میں اب کوئی چیز موجود نہیں ہے. فنا. مدومیت. نیستی. عدم. ناس. نابودگی. فنا پذیری. خاتمہ بجھانے کا فعل. Meaning, the state or process of being extinguished or wiped out, the termination or end of something, particularly of a species or group of organisms. Public boards for intermediate and secondary education still have a poor reputation in terms of the quality of their assessments and what they measure. Despite decades of reform efforts, board examinations are still known to be too dependent on memory and rote learning,
past papers and predictable patterns for the kind of questions that are asked. The practical side of assessments continues to be ignored. And there are serious concerns about grade inflation as well. As a result, performance in the board examinations has become a weak measure for the quality of education and even individual standing. One outcome of this is that parents and students who can afford it have been opting for other boards. The Cambridge O/A-level examinations are the main alternative, but high school diplomas and international baccalaureate are options as well. These international boards/certifications have a positive reputation, but they come with a significant price tag. Most children/parents cannot afford the examination fees of international boards, and they also cannot afford the fees charged by schools that prepare students for such examinations. Though we have 30-odd intermediate and secondary examination boards in the country, 28 of these are public/government boards. These 28 boards, apart from the Islamabad Capital Territory Board, are geographically defined and have, more or less, monopolies in the regions they work in. Punjab has 8 boards. The earliest one, the Lahore Board, was set up in 1954, while the last one to be established was the Sahawal Board in 2012. Similarly, Sindh has 6 boards, where the latest one, the Shahid Benazirabad Board, was set up in 2015. Why do we have so many boards in the public sector? Why are they geographically defined and given monopolies, and why are they not allowed to compete with each other? The government has been unable to reform these boards through bureaucratic initiatives, so should we not allow the market to work its magic through competition? The private boards have to compete for students. Why should the same pressure not be applied to the public boards? Despite all the talk, progress on reforming our examination systems and boards has been slow. 28 boards setting examinations when Pakistan does not have many assessment experts and/or psychometricians is clearly asking for poor quality exams. If we had just one board or a few boards, we could gather experts there. With 28 boards, this is not possible. When the Aga Khan Board can hold examinations in all schools affiliated with it across Pakistan, and Cambridge can do so across countries, what is the justification for having a board in each division across the country? There is none. At best, we should have administrative structures to administer assessments in each district, but examination making and grading can and should be centralized for better control, quality and quality assurance. Though reforms in examination systems and boards have been talked about for decades, progress has been slow at best. Even when the Cambridge O/A-level system has lost much of its luster and is now thought to have been figured out by local schools and teachers, Pakistani boards have been unable to catch up. There is still a significant difference, in reality, in the quality of examinations, curriculum and books, and the difference is even larger in terms of perceptions of quality. One way forward might be to allow the domestic boards to compete with each other beyond their currently mandated geographical boundaries. Let the Lahore Board court schools and/or students in Shahid Benazirabad or any other place in Pakistan, and vice versa. The government should allow public and private schools, if they are not already allowed to register with the board of their choice. This competition, if properly incentivized, could provide the needed vigor to the boards. Another way forward might be to encourage more private boards. We have only 2 private domestic boards. The Aga Khan Board is the more active one in this space. But, given the size of the country and the large youth population, there is space for more boards in terms of the number of students. There is definitely space for more boards on the quality spectrum as well. Between the more expensive international boards and many local public boards, there is a wide gulf in terms of pricing and quality. Federal and provincial governments should think about encouraging some universities to set up boards of their own. Many universities are already administering entry tests to students, and some of them might be willing and able to make the investments needed to set up boards. These boards should have no subsidy, should not be given any monopoly rights, and should not have any state funding. But they should be provided with a level playing field where there is no advantage to the government boards in terms of having school and/or individual student registrations of either private or public sector schools.
Millions of students appear for high school examinations in Pakistan every year. We know most of them do not have access to quality matriculation and intermediate level assessments. And the government, despite decades of reform efforts, has been unable to reform assessments substantially. International examinations are expensive and mean a foreign exchange outflow. They are also going to get more expensive. Our children deserve better. It is time to carry out some structural reforms. We should allow more competition in and between boards, public and private, and we should encourage more private players to set up examination boards. If we have competition, even one or two more players entering the field, the pace of reforms is likely to become faster. The sluggish boards too will have to improve or they will face extinction. The writer is a senior research fellow at the Institute of Development and Economic Alternatives, and an associate professor of economics at LUMS. Published in Dawn, March 31, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. इंटरमीडिएट और सानवी तालीम के पब्लिक बोर्ड्स अब भी अपने जायज़ों के मेयार और उनकी पैमाइश के लिहाज से खराब साख रखते हैं। कई दहाइयों की इस्लाहाती कोशिशों के बावजूद बोर्ड इम्तिहानात अब भी मेमोरी और रटे की तालीम, माजी के पर्चे और पूछे जाने वाले सवालात के पेशगोई के नमूनों पर बहुत ज़्यादा मुनहसर है। जायज़ों के अमली पहलू को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है और ग्रेड अफरात ज़र के बारे में भी संगीन खदशात हैं। नतीजतन बोर्ड इम्तिहानात में कारकर्दगी तालीम के मेयार और यहाँ तक कि इनफरादी हैसियत के लिए कमज़ोर पैमाना बन गई है। इसका एक नतीजा यह है कि वालिदैन और तलबा जो इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं वो दूसरे बोर्डों का इंतखाब कर रहे हैं। कैम्ब्रिज बोर्ड/ए लेवल के इम्तिहानात अहम मुतबादिल हैं, लेकिन हाई स्कूल डिप्लोमा और इंटरनेशनल बैचलर भी ऑप्शंस हैं। इन बैन-अल-अक़वामी बोर्ड्स/सर्टिफिकेट्स की मुस्बत साख है, लेकिन वो एक अहम कीमत टैग के साथ आते हैं। ज़्यादातर बच्चे/वालिदैन बैन-अल-अक़वामी बोर्ड्स की इम्तिहानी फ़ीस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और वो उन स्कूलों की तरफ से वसूल की जाने वाली फ़ीस भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जो तलबा को इस तरह के इम्तिहानात के लिए तैयार करते हैं। अगरचे हमारे पास मुल्क में इंटरमीडिएट और सेकेंडरी इम्तिहानात के 30 बोर्ड हैं, लेकिन इनमें से 28 सरकारी बोर्ड हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी बोर्ड के अलावा ये 28 बोर्ड्स जोग्राफियाई तौर पर मुतय्यन हैं और कम व बेश इन इलाकों में उनकी इजारादारी है जिनमें वो काम करते हैं। पंजाब में 8 बोर्ड्स हैं। सबसे पहला लाहौर बोर्ड 1904 में कायम किया गया था, जबकि आखिरी बार 2012 में साहिवाल बोर्ड कायम किया गया था। इसी तरह सिंध में 6 बोर्ड्स हैं, जहां शहीद बेनज़ीराबाद बोर्ड 2015 में कायम किया गया था। हमारे पास सरकारी शोबे में इतने सारे बोर्ड क्यों हैं? उन्हें जोग्राफियाई तौर पर क्यों मुतय्यन किया जाता है और उन्हें इजारादारी क्यों दी जाती है और उन्हें एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती है? हुकूमत ब्यूरोक्रेटिक इक़दामात के ज़रिए इन बोर्ड्स की इस्लाह करने से कासिर रही है, तो क्या हमें मुसाबकत के ज़रिए मार्केट को अपना जादू दिखाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए? निजी बोर्डों को तलबा के लिए मुकाबला करना होगा। यही दबाव पब्लिक बोर्ड्स पर क्यों नहीं डाला जाना चाहिए? तमामतर बातचीत के बावजूद हमारे इम्तिहानी निज़ाम और बोर्ड्स में इस्लाहात पर पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। 28 बोर्ड्स ऐसे वक्त में इम्तिहानात का तयन कर रहे हैं जब पाकिस्तान में ज़्यादा तशख़ीसी माहिरीन और साइकोमेट्रिक्स नहीं हैं, वाज़े तौर पर नाकिस मेयार के इम्तिहानात का मुतालबा कर रहे हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक बोर्ड या चंद बोर्ड होते तो हम वहां माहिरीन जमा कर सकते थे। 28 बोर्ड्स के साथ ये मुमकिन नहीं है। जब आगा खान बोर्ड पाकिस्तान भर में इससे वाबस्ता तमाम स्कूलों में इम्तिहानात मुनक्कद कर सकता है और कैम्ब्रिज तमाम ममालिक में ऐसा कर सकता है, तो मुल्क भर में हर डिवीज़न में एक बोर्ड रखने का क्या जवाज़ है? कोई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हर ज़िला में तशख़ीस के इंतज़ाम के लिए इंतज़ामी ढांचा होना चाहिए, लेकिन बेहतर कंट्रोल, मेयार और मेयार की यकीन दहानी के लिए इम्तिहान साजी और ग्रेडिंग को मरकज़ी बनाया जा सकता है और होना चाहिए। अगरचे इम्तिहानी निज़ाम और बोर्डों में इस्लाहात के बारे में कई दहाइयों से बात की जाती रही है,
लेकिन पेशरफ्त सुस्त रही है। यहाँ तक कि जब कैम्ब्रिज के लेवल सिस्टम अपनी चमक खो चुका है और अब ये ख्याल किया जाता है कि मकामी स्कूलों और असातिज़ा ने इसका पता लगा लिया है, तब भी पाकिस्तानी बोर्ड्स इस पर काबू पाने में नाकाम रहे। हकीकत में इम्तिहानात, निसाब और किताबों के मेयार में अब भी एक अहम फ़र्क है, और मेयार के तसव्वुरात के लिहाज से ये फ़र्क और भी बड़ा है। आगे बढ़ने का एक तरीका यह हो सकता है कि डोमेस्टिक बोर्ड्स को उनकी मौजूदा लाजमी जोग्राफियाई हुदूद से बाहर एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की इजाज़त दी जाए। लाहौर बोर्ड को शहीद बेनज़ीर आबाद पाकिस्तान के किसी भी दूसरे मकाम पर स्कूलों और तालिब इल्मों को अदालत में पेश करने दे, और उसके बरक्स हुकूमत को सरकारी और निजी स्कूलों, अगर उन्हें पहले से इजाज़त नहीं है, को अपनी पसंद के बोर्ड के साथ इंदराज करने की इजाज़त देनी चाहिए। अगर इस मुकाबले की मुनासिब हौसला अफजाई की जाए तो ये बोर्ड्स को मतलूबा जोश व खुरूश फराहम कर सकता है। आगे बढ़ने का एक और तरीका यह हो सकता है कि मज़ीद निजी बोर्ड्स की हौसला अफजाई की जाए। हमारे पास सिर्फ 2 निजी डोमेस्टिक बोर्ड हैं। आगा खान बोर्ड इस शोबे में सबसे ज़्यादा फ़ाल है, लेकिन मुल्क के साइज़ और नौजवानों की बड़ी आबादी को देखते हुए तलबा की तादाद के लिहाज से मज़ीद बोर्डों के लिए जगह है। मेयार के स्पेक्ट्रम पर भी यकीनी तौर पर मज़ीद बोर्ड्स के लिए जगह है। ज़्यादा महंगे बैन अल-अक़वामी बोर्ड्स और बहुत से मकामी पब्लिक बोर्ड्स के दरमियान कीमत और मेयार के लिहाज से एक वसी खलीज है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कुछ यूनिवर्सिटियों को अपने बोर्ड कायम करने की तरगीब देने के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सी यूनिवर्सिटियां पहले से ही तलबा को एंट्री टेस्ट दे रही हैं, और उनमें से कुछ बोर्ड कायम करने के लिए ज़रूरी सरमायाकारी करने के लिए तैयार और अहल हो सकते हैं। इन बोर्डों को कोई सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें कोई इजारादारी का हक नहीं दिया जाना चाहिए, और न ही उनके पास कोई रियासती फंडिंग होनी चाहिए। लेकिन उन्हें यकसा मौके फराहम किए जाने चाहिए जहां सरकारी बोर्ड्स को निजी या सरकारी शोबे के स्कूलों के स्कूल और इनफरादी तालिब इल्मों की रजिस्ट्रेशन के मामले में कोई फ़ायदा न हो। पाकिस्तान में हर साल लाखों तालिब इल्म हाई स्कूल के इम्तिहानात में शिरकत करते हैं। हम जानते हैं कि इनमें से ज़्यादातर को मियारी मैट्रिक और इंटरमीडिएट सतह के जायज़ों तक रसाई हासिल नहीं है, और हुकूमत दहाइयों की इस्लाहाती कोशिशों के बावजूद तखमीनों में खातिर खा इस्लाह करने में नाकाम रही है। बैन अल-अक़वामी इम्तिहानात महंगे हैं, और उसका मतलब गैर मुल्की ज़र मुबादला का इखराज है, वो भी मज़ीद महंगे होने जा रहे हैं। हमारे बच्चे बेहतर के मुस्तहिक हैं। अब वक्त आ गया है कि कुछ सख्ती इस्लाहात की जाए। हमें सरकारी और निजी बोर्ड्स के अंदर और उनके दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा मुसाबकत की इजाज़त देनी चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा निजी खिलाड़ियों को इम्तिहानी बोर्ड कायम करने की तरगीब देनी चाहिए। अगर हमारे दरमियान मुकाबला होता है, यहाँ तक कि एक या 2 मज़ीद खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, तो इस्लाहात की रफ्तार तेज़ होने का इम्कान है। सुस्त बोर्डों को भी बेहतर बनाना होगा, वरना उन्हें मदूमियत का सामना करना पड़ेगा। मज़मून निगार इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स में सीनियर रिसर्च फेलो और लम्स में इकनॉमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अखज़ शदा बतारीख 29 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.